हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 29, 28 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के पेज पे अवेलेबल हैं, तो आप प्लीज़ वो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और इलेक्टेड बाय द असेंबली? ऑप्शंस हैं 1/6 ऑफ द मेंबर्स, 1/3 ऑफ द मेंबर्स, 1/12 ऑफ द मेंबर्स या फिर 5/6 ऑफ द मेंबर्स। करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, 1/3 ऑफ द मेंबर्स of state legislative council are elected by the assembly. Next question, the legislative council in a state in India may be created or abolished by the options हैं president on the recommendation of the governor, parliament after the state legislative assembly passes a resolution to that effect, या फिर governor on a recommendation of by the state cabinet. Correct answer is third option, parliament after the state legislative assembly passes a resolution to that effect. Next question, an ordinary bill passed by the state assembly can be delayed by the legislative council for a maximum period of options हैं 1 month, 6 months, 3 months या फिर 4 months। तो ये डिले किया जा सकता है for a maximum period of 4 months। फोर्थ ऑप्शन is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच amidst the following states has a legislative council? ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर पंजाब। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर? ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फिर प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद द प्योर परमिशन ऑफ द ऑप्शंस हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन गवर्नर ऑफ द स्टेट। Next question, there is no provision in the constitution for the impeachment of the options हैं chief justice of India, chief justice of a high court, governor या फिर vice president। Correct answer is third option governor। Next question, who was the first woman governor of a state in free India from out of the following? options हैं Mrs. Sarojini Naidu, Mrs. Sucheta Kripalani, Mrs. Indira Gandhi या फिर Mrs. Vijay Lakshmi Pandit। Correct answer first option, Mrs. Sarojini Naidu was the first woman governor of a state। Next question, the states in India are demanding greater autonomy from the center in the dash field. Options हैं legislative, administrative, financial या फिर all of the above. The correct answer is fourth option, all the above. Next question, the council of ministers in a state is collectively responsible to options हैं the governor, the chief minister, the president of India या फिर the legislative assembly. Correct answer is fourth option, the legislative assembly. Next question, what is the duration of membership of state legislative councils? Options हैं 3 years, 5 years, 6 years या फिर 9 years. Correct answer is third option 6 years. Next question, the governor of a state has no power to options हैं prorogue the assembly, dissolve the assembly, adjourn the assembly या फिर summon the assembly. Correct answer is third option adjourn the assembly. Next question, the members of the legislative assembly are options हैं indirectly elected, directly elected by the people, partly elected and partly nominated by the governor या फिर mainly nominated. Correct answer is second option directly elected by the people. Next question, money bills originate in the state legislative assembly on the recommendation of options हैं the governor, the chief minister, the finance minister या फिर the speaker. Correct answer is first option the governor. Next question, the chief minister is appointed by the options हैं the governor, the president, the chief justice of supreme court, the chief justice of high court. Correct answer is first option, chief minister is appointed by the governor. Next question, the upper house of the state legislature in India is called options हैं legislative council, legislative assembly, executive council या फिर governor in council. Correct answer is first option legislative council. Next question, in case no party enjoys absolute majority in the legislative assembly of a state, the governor will go by options हैं the advice of former chief minister, the advice of the prime minister, the advice of the president of India या फिर his own discretion. The correct answer is fourth option, his own discretion. Next question, the chief minister is appointed by repeated question है by the governor. Third option is the correct answer. Next question, the governor of an Indian state is appointed by the options हैं president of India, prime minister, chief justice of high court, chief minister of the state. Correct answer is first option president of India. Next question, a state cannot exist without options हैं democratic government, parliamentary government, presidential government या फिर some kind of government. Correct answer fourth option, some kind of government.
ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके आप हमारी दूसरी वीडियो सीरीज़ भी देख सकते हैं, जो कि एसएससी रेलवेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।